तो दोस्तों मैं अपनी नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और इस नई वीडियो में मेरी टीम माइंडबेंडर ने बहुत मेहनत करी है। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं भी कि वो दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। मेरी टीम माइंडबेंडर में 3 जने हैं, वो बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। एडिटिंग मेरी, कंटेंट मेरा, वीडियो मेरी। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है, दोनों के दोनों कुछ नहीं करते हैं। आगे की भैया हम बोल नहीं पाते हैं, शकल अच्छी नहीं है, तो क्या मतलब सारा क्रिकेट मार लेगा तू? जब नहीं कर पाते हो तो लेना पड़ेगा ना कुछ तो। चोर ससुरी के नाते ज्यादा मत बोल, चलो समझा? चलो वीडियो चल शुरू चल करते हैं। चल। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप विंडोज 7 को अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो, क्योंकि विंडोज 7 जो है बंद हो चुकी है। और अगर आप उसमें अपना कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करते हो तो वो अपडेट होकर विंडोज 10 में चली जाती है। विंडोज 10 में जाने के बाद क्या होता है कि कई लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है कि उसकी सारी सेटिंग चेंज होता है, इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो कैसे चलाएँ, कहाँ से चलाएँ, कैसे क्या करें, कुछ नहीं समझ आता है। और दूसरी बात ये कि नेट कनेक्ट करते ही हमारा जो विंडो का ट्रायल पीरियड शुरू हो जाता है, उसको कैसे बंद करें, आज मैं अपनी वीडियो में यही बताऊंगा। दूसरी बात ये कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा विंडो 7 को इंस्टॉल करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ विंडो कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं एकदम परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के दूँ आपको कि कैसे विंडो 7 को कंटिन्यूस अपने कंप्यूटर में रन कराना है, तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब कैसे सेटअप करना है। चलिए सकते हैं। अरे बत्ती तो गई।
है।